I went up to 9 or 9.5 LPA. Then I started my journey, data science journey, and then onwards I suddenly got multiple offers. उसमें सबसे highest salary मुझे actually 49 LPA की मिली थी. For a particular assignment, मैं और राजेश हम दोनों स्कोर बोर्ड पे बॉटम पे थे एक बार. रह गया था कि हम दोनों ने एक दूसरे से कॉपी किया है. But then उस दिन के पहले we had never had any interaction with each other. Are you serious about this? वो भी मेरी मॉक लेती थी, मतलब हर वक्त मैं नींद से उठा हूँ और बोलने लगी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एक्सप्लेन योर रिसेंट प्रोजेक्ट. कि उस समय मैंने 6-7 महीने में करीब 70 मॉक इंटरव्यूज दी. That is the amount of effort you put in. Welcome to the first episode of Alma AllStars, Stories That Inspire. I'm your host Chaitali Bhatia from the leadership team at AlmaBetter. With this series, we bring you the inspiring journeys of our alumni and a lot of fun stories. Without wasting much time, let me introduce our star alumni who are here with us. Rajesh More, who's a lead data scientist at EPAM, and we have Soumya Jain, who's a lead assistant manager at EXL. Welcome, guys. How does it feel? Thank you. Feeling very excited. Anxiety or nervous or excited? Little anxiety, as this was like this is our first, podcast. So where are you guys coming from? I'm coming from Gurgaon. Little nervous. इतने attention की आदत नहीं है. Celebrities बना दिया ना आज हमें. तुम लोग तो हो. मुझे भी बना दिया आज. I'm coming from Gurgaon. I landed here और जैसे ही मौसम का चेंज हुआ, I felt like हाँ लैंड कर गए एक सिटी ऑफ स्टार्टअप में और एक amazing environment. Yeah, and I'm actually basically comes from a small town of Maharashtra, called Ambezogai, and currently living in Pune because my office also is in Pune. So if you could just tell our viewers a little about your cohorts and which year did you graduate and which course did you take up at AlmaBetter? I was from cohort Aravali. I signed up for data science course and I'm a 2017 pass out. And cohort Aravali is the which batch? It's the first batch. Awesome. I'm also from the same batch of cohort Aravali, and I graduated from AlmaBetter into 2021 itself. Okay. So I was also from the first batch. First batch. Okay. Yeah. And what course did you pick up? I learned data science, the full stack data science course. So let's go a little deeper into your professional journeys. How has your career trajectory been, right? So Rajesh, why don't you tell me that आपने कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ पे हो? A little about your career. Sure. So I graduated from College of Engineering Ambezogai, from my hometown itself. After that, I joined one startup. I was doing my job on very meager, payment and all from 2015 to 2020. But then I thought, no, I should. Along with that, also I was preparing for UPSC exams, and then I realized that no, sustaining in very meager payment and it is not take you to the point higher than which I am currently doing right now. Like then I started searching the different courses. I was more at that time I was more inclined towards learning AI, and that's how I came to know about AlmaBetter, and I started my journey of learning data science and AI from there, and this actually changed my entire life of what I was. I was back from 2013 to 20 and afterwards. So there is a big difference. So आपने बोला 15 से 20 तक Yes. you were earning a meager salary and you were doing something which was more like UPSC or something. Yeah. And उससे पहले there was no other job which was there any other position, any other job?
that you had? No, actually I was doing full-time UPSC preparation. After 1 year of preparation, and then I thought, no, I should get job first, and then I will prepare simultaneously for the UPSC exams. And I joined one Pune-based organization and started working, as well as started preparing from there itself. Right. And I'm sure UPSC या तो नहीं हुआ या हो गया, तो ये चॉइस कैसी थी कि अभी डेटा साइंस या AlmaBetter की चॉइस जो आपने ली, वो कैसे? Like UPSC, doing UPSC is very easy for all of us, but the cracking UPSC and having patience to keep yourself motivated throughout that journey is quite tough for everyone. Right. So that's why I thought, like, I actually I've exhausted all my attempts during that. Got it. And then I start, no, okay, I will I will choose the second option now, a second best option, you may say. So second best option was like going into data science. So Right. yeah, you were telling about your professional journey. So currently, right after UPSC, and then at what was the position? The position was software engineer. Software engineer. Yes. And then now you're a lead data scientist. Lead data scientist. How yes. many years in data science? Now more than for maybe 4 or 5 years, you can say. That's amazing. Okay. Yeah. So Soumya, let's understand your professional journey. आप बताइए कि from your graduation to what exactly did you do after that, and how did you get into the field of data science? While I was graduating the last year, the only dream was to get a campus placement, and I got that. So I came to Bangalore. I started earning again, जैसे कि राजेश ने बताया, वही थोड़ी बहुत सैलरी के साथ. After that, what I knew was कि coding ही है जो पैसा दिला सकता है. Okay. But then that was one of my weakest parts. मुझे coding नहीं पसंद थी और ना आती थी. I started looking for options, professions which do not require coding. Somehow data analysis, data scientists came up. I started researching about that. Came across AlmaBetter on social media. Took the course, and then it changed my life completely. Now I like coding and I'm doing coding. That's a part of my daily job now. And then I've grown in terms of salary and the quality of work. Wow. So you said you were not in the field of coding, and you also said that you didn't enjoy coding. Scared and of you were coding. scared of it, right? So what field were you in? How was it different from coding? And how do you feel about coding now? I was a telecom engineer. It Okay. was totally different from data science. So now I totally feel different about coding. I feel it's interesting and it needs consistency, which was lacking earlier. So I developed two things now, consistency and coding. तो मतलब प्रैक्टिस से कुछ भी परफेक्ट कर सकते हाँ. हो. यू आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरी कि Yes. कंफर्ट लेवल से खुद को थोड़ा सा बाहर किया Hmm. और उसको प्रैक्टिस किया, एंड देन यू आर लाइक, लिसन, आई Yes. हेटेड दिस बट टुडे आई लव इट एंड आई कैन डू इट. That's amazing, man. So, and how many years in the field of data science for you? It's been around 2.5 to 3 years for me. 2.5 to 3 years. Okay, with that we move into our next segment, which is called For a Better Tomorrow. We all work towards a better tomorrow. मतलब ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ कि हम better tomorrow के लिए नहीं काम करते. आज हम यहाँ क्यों हैं कि कल अच्छा हो सके, कुछ ज़्यादा कमा सकूँ, कुछ better कर सकूँ अपनी family के लिए. We can all improve our standard of living. अपनी कोई dreams होती हैं कि मैं जाके मुझे यहाँ travel करना है, मुझे अपने parents के लिए ये करना है. I want to understand, before you joined AlmaBetter, right? What was that better tomorrow that you were working towards? क्या चाहिए था उस वक्त आपको? ऐसी कौन सी ड्रीम थी? अगर मेरा बेटरमेंट खुद का अगर मतलब चाहता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बेहतर सैलरी मिलनी चाहिए. एक तो मेरा मतलब बेसिक जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये कनेक्टेड है. अगर सैलरी अच्छी है तो आप आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सकते हो, right? You can contribute towards the society as well, because you have now surplus money available with you. I so agree with you, right?
if you have more money, only then you have to first take care of yourself, your family, and then you can start contributing to society as well. और जब लोग बोलते हैं कि हाँ यार इसकी सैलरी देखो अच्छी है या फिर ये इस लेवल पे है, तो पीपल स्टार्टेड मे बी रिस्पेक्टिंग यू. अगर अच्छी सैलरी है या फिर आप बेटर पोजीशन पे हो तो आपको वैसे अच्छी मतलब हो सकता है कि हाँ रिस्पेक्ट मिले, और अच्छी सैलरी है तो अच्छी लड़की भी मिलेगी, ठीक है लड़कों को. काफी अच्छा बेटर टुमारो है, राइट? सो यू आर एबल टू प्लान योर एंटायर लाइफ अराउंड इट, राइट? आपको आप जो कह रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ कि पूरी की पूरी लाइफ में आप इफ यू अर्न बेटर, you're able to do a lot better in terms of the other things as well, right? I understand that. What about you? Coming to the point कि women के लिए financial stability या financial freedom कितनी important है, I don't think इसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी है. But for me better tomorrow is जहाँ मैं अपने decisions खुद ले सकूँ, मेरे पास freedom of time हो और freedom of money हो, और वो सिर्फ better education, better qualification और एक अच्छी जॉब से ही आ सकता है. तो बेटर टुमारो का तो मेरे लिए यही मीनिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरों को हेल्प करने के लिए भी जब आप खुद से फ्री होगे तब आप किसी को हेल्प कर पाओगे. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अर्न वेल फॉर दैट मैटर, एंड ऑल्सो एज आई लव ट्रैवलिंग, सो टू ट्रैवल द वर्ल्ड आई नीड मनी एंड इट इज सोर्स्ड फ्रॉम माई जॉब. You guys told me about what did a better tomorrow mean to you, right? I want to understand that when you joined AlmaBetter and आपने इन सब dreams के साथ start किया, were you able to achieve it in some way right after you graduated? Were you able to achieve that dream, that goal that you were working so hard towards? I won't say I've achieved it already, but I'm one step closer now. I feel कि confusion तो पहले भी था, अभी भी है, but now I can take calculated risks. So that's one thing I've gained, and that I believe that's very important, that we are able to select. Like earlier I was directionless and clueless what to choose. Now at least I know. For me, yeah, it's also a journey of full of adventures. एक बार AlmaBetter ज्वाइन करने के बाद की जो जर्नी है और जो पहले की जर्नी थी, एक्चुअली जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तब एक रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है या फिर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है वो डेवलप हुआ था समहाउ. तो आई थॉट कि नो, दिस इज़ न्यू फील्ड, दिस विल gain lot of importance in the upcoming future, because everybody is now saying that AI is the future or AI is the new electricity. So I was thinking, why not, I should be in that particular technology, though it started growing at that time. It was not fully grown like we see nowadays. तो सैलरी वाइज भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ था डेटा साइंस में या फिर AI में आने के बाद. जब पहले मैं 10 लाख कमा रहा था, तो उसके बाद माई सैलरी गेट 4x from that. I've been trying to take this secret from Rajesh ever since. Yeah, please What's tell us. secret about like his 4x 4x jump, right? jump. आज तो बता ही दो राजेश, सबको बता दो कि आपका 4x का सीक्रेट क्या है. तो 4x का सीक्रेट ये है कि हाँ, एक तो मैं कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालता रहा. मेरा लैपटॉप सुबह 7 बजे जो ओपन होता था, और रात को 11-12 बजे वो मैं क्लोज करके सो जाता था. उस दौरान तो रात को 11 बजे. हाँ. तो इतने एफर्ट्स और regular classes is one first and very important. Like if you want to make some change in your life, so consistency is very important, and that I achieved through when you say work. regular classes, you mean attending the classes regularly? Yes. उसको attend करना बहुत ज़रूरी है और मिस ना करो. हाँ, एक तो मैंने एक्चुअली एक क्लास एक्चुअली मिस किया था, वो मेरे बर्थडे पे किया था. इतना मुझे मतलब इतने साल बाद भी मुझे पता है कि एक ही क्लास मिस हुआ है और वो बर्थडे के दिन मिस हुआ है, और वो भी घर जाने के बाद मैंने तुरंत कवर किया था. We don't want to give up our social lives for what we want to achieve. हमें अचीव बहुत कुछ करना है, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो
लगती हैं वो sacrifices नहीं करनी, but that's a huge sacrifice. हाँ, इसको मैं एक्चुअली सैक्रिफाइस नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ खुद के लिए एक्चुअली कर रहा हूँ, या फिर मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है, या फिर जो भी towards your own goal, right? ओन गोल, राइट. ठीक है. So we guys spoke about salaries, right? We touched upon that topic a little, and a lot of us feel कि salaries are not important, growth चाहिए life में, कुछ सीखना है, but I think salaries are very very important, right? What we're earning, what are our incomes, they're very important, right? So do you guys agree with me on that? Definitely. You definitely I do. Do you? Even I do. Yes. You do. At this point of life, I definitely do. I do not know what I think 10 years from now or 20 years from now, but at this point, yes. You feel it is. Okay, so if you are comfortable and we can touch upon this topic a little, then can you help us understand what was your salary trajectory over the years, or your income trajectory over the years? Rajesh will love this. So for me, I started with around 4 lakhs per annum, and then after promotion and after hikes in the same organization, I went up to 9 or 9.5 LPA. Then I started my journey, data science journey, and then onwards I suddenly got multiple offers. उसमें सबसे highest salary मुझे actually 49 LPA की मिली थी, Wow. जो कि You blow my mind with that figure right now. Yeah. but I choose, actually at that moment of time, I choose stability or the better company, Yeah. better designation, Yeah. and I chose the organization. Right. And the jump that you're telling was before and after AlmaBetter, you're saying, Yes. right? So 9 before AlmaBetter was the Yes. last, and then right after AlmaBetter you got the opportunity of a 49 lakh Yes. per annum, which you rejected for more stable job. हाँ, मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज यूट्यूब पे देखी थी, अब मैं खुद उस स्टोरी का पार्ट होने जा रहा हूँ तो इट्स अमेजिंग Such a एक्चुअली. nice thing to say. That's actually such a nice thing to say. हम दूसरों को देखते हैं, and then जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या फीलिंग लगती है वो? जैसे कि अभी आज लग रहा है कि मैं तो एक्साइटेड हूँ, या फिर कुछ लाइफ में कुछ अचीव किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लाइक मेरे पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग एज अ टीचर इन ZP स्कूल. तो वो हमेशा कहते थे कि मतलब दे ऑलवेज पुश्ड मी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. तो उनको लगता था कि 4 पैसा ऊपर नीचे, बट गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो कंटिन्यू रहेगी. तुम्हारा आज है कल नहीं है, पता नहीं कैसी दुनिया हो गया तुम्हारी. तो गवर्नमेंट की वो स्टेबिलिटी है, आप रिटायर होंगे उसके बाद भी आपको ग्रेचुइटी अमाउंट या पेंशन मिलती रहेगी. व्हेन दे सॉ दैट आई गॉट सच अ गुड हाइक, then they thought like then they are telling neighbors and all relatives that okay, हमारा भैया जो है अभी हमारी जितनी सैलरी है वो उतना इनकम टैक्स पे कर रहा है अभी. तो I thought they are now feeling proud for me, and it was really nice journey. Amazing feeling for your parents as well, right? When Yeah. you're like they were very very proud of you when you got that. I have a similar story in terms of my parents, right? So they're also, my dad is from the government background, and he was also like, ye sab kya kar rahe ho, what is this corporate, just stick to the government jobs, UPSC karo and all of it. But in their times probably those were the most stable things, and that's why they chose those. But our lives are so different, and the kind of trajectory we're seeing are so different from them. What about you, Soumya? Let's understand from you that how has your income trajectory been? I started off with the same 4 to 5 lakhs. After AlmaBetter, I got placed and my salary was doubled. And then I took another switch and it was again doubled. So, Wow. yeah. Wow, that's amazing. So, do you think stepping into the data science field or choosing the data science field was one of the reasons or one of the biggest contributors to such a better tomorrow that you've been talking about, or such a better salary hike that you've been talking about? Yes, it has been. याद है मुझे, पहले भैया दीदी जो भी दिखते थे अच्छी सैलरीज वाले, उनसे पूछा करते थे आपके एक्सपीरियंस बताओ, आपने क्या किया ये बताओ.
और आज मुझसे मेरे एक्सपीरियंसेस कोई पूछ रहा है, isn't it a better tomorrow? Yeah. हो गया ना better tomorrow. Yeah. So that's what it means to me. आपकी बात दिल को छू गई. But yeah, it is. Yeah, I think I'm sure it must have been also very emotional, right? Like when you guys are talking about it, are you also like kind of remembering, those times कि parents को कैसा लगा, आपको कैसा लगा? जब मुझे ये हाईएस्ट सैलरी का जो ऑफर आया था, तब पूरी रात में सो नहीं पाया था कि जो उस खुशी से कि अरे मतलब ये सही में मुझे मिला है. मतलब मैं लिटरली मतलब उस दिन सो नहीं पाया. हाँ, मैं भी मतलब एक या दो रात, बट हाँ. So with that we move to our next segment and it's called No Pain No Gain. बिना पेन के कुछ भी नहीं अचीव होता. हम इतनी सक्सेसेस देखते हैं. Now I want to become a celebrity. I want to become that data scientist. लेकिन बिना पेन के कोई भी जर्नी कंप्लीट नहीं होती और कोई भी सक्सेस doesn't really happen. Therefore the name of the segment No Pain No Gain. ऐसा कोई struggle या कोई hurdle था, which was genuinely so painful that you were like, I want to give up now. नहीं हो पा रहा मुझसे. And how did you literally overcome that? कई बार हुआ ऐसा, बट फॉर मी स्पेशली मैंने आपको बताया था कोडिंग मेरा वीक पार्ट है. तो व्हेन आई स्टार्टेड, फर्स्ट मंथ वाज ओके, सेकेंड मंथ कोडिंग स्टार्टिंग में इट वाज ओके, बेसिक्स जब तक चल रहे थे. डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज्ड और मुझसे नहीं होता था. असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे. आई यूज्ड टू क्राई ऑल नाइट. Take the assignment, sit, and I used to cry and keep solving them. One fine day I thought, I can't do this, I'll quit. And then I called one of our mentors. I said, coding तो मुझसे नहीं होगा, तो मैं रुक जाती हूँ यहीं, नहीं आगे बढ़ती. He told me कि that's not the only thing. There are so many paths to this profession. और चीज़ों पे भी ध्यान दो, एक चीज़ पर अटक मत जाओ. जितना आ रहा है उतना करो, परफेक्शन कभी नहीं आएगा, इट विल कम ओवर टाइम. हाँ, करती गई एंड देन हो गया वो धीरे धीरे. Do you want to name this mentor? विकास. Oh wow, अपना founder. हाँ जी. Oh, he said that to Yes. you. So what was that feeling when you overcame this hurdle? It was amazing. ऐसा लगा ये मुझसे हो गया. I couldn't believe कि हो गया ये. और फिर we moved forward in the course and eventually coding followed up. होता गया वो धीरे धीरे और अब वो प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट. Nice. What about you, Rajesh? कि कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत painful hurdle that was there? एक्चुअली सबसे जब हम जर्नी शुरुआत करते हैं, वही सबसे बड़ा एक्चुअली ये होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि हाँ, अब मुझे मॉड्यूल्स पास करते जाने हैं और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि पासिंग ग्रेड्स है. उस समय आउट ऑफ 2000 वी नीड टू गेट 1400 क्रेडिट्स फॉर ईच मॉड्यूल. और पहले मॉड्यूल के कुछ शुरुआत में ही मैं लोवेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब मेरा तो लोवेस्ट परफॉर्मेंस था उस Are you समय. serious about this? हाँ, जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब मेरा रैंक कुछ अराउंड 19 था. तब 21 स्टूडेंट्स थे, तो मेरे नीचे सिर्फ दो लोग थे और मेरे ऊपर एक. ऐसा हम लोगों ने मतलब मैं कहूँगा कि हम जैसे रोने वाले लोगों ने चार लोगों का, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप के ऊपर, और हर रोज़ हम वही बोलते थे कि अरे ये नहीं हो रहा है, हम उसको क्विट कर देंगे, 1 महीने से पहले ही हम छोड़ के जाने वाले हैं. और 3 लोग गए भी छोड़ के, सिर्फ मैं अकेला रह गया. अब मैंने बोला कि नहीं, अब ये डिसाइड किया है तो मैं ये कंप्लीट ही करके अब रहूँगा. तो जर्नी शुरुआत हुई वैसे, और चैलेंजेस थे. मैंने शिवम की हेल्प ली, उस मतलब वो Shivam, the co-founder of founder of AlmaBetter, right? विकास की मदद ली, और आलोक थे सिक्वल के लिए, एसक्यूएल Right. की ट्रेनिंग देने के लिए मुझे. उन सब ने पर्सनली हेल्प की मुझे उस समय. और ये रैंक धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगा. जब 19 से शुरुआत किया था, तब सेकंड मॉड्यूल आते आते मेरा रैंक शायद 12-13 हो गया था. उसके बाद 5-6 हो गया था. उसके बाद 2 पे गया था मैं.
तो ये चेंज मैं हर रोज़ देखता था मेरा कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन था हमारे ही बीच में, हम 15-20 लोग के बीच में, कि मैं पर्सनली 2 या 3 बार लीडर बोर्ड चेक करता था कि व्हाट्स माय रैंक नाउ, आई हैव सबमिटेड माय असाइनमेंट, आई हैव गिवन माय मॉक इंटरव्यू, तो मेरा अभी कितना रैंक आ रहा है। दिन तो में 2 से 3 बार। दिन में 2 से 3 बार मैं चेक करता था हर How do you know this? हर We were sailing in the same boat. Right. Okay. दिन में 2 से 3 बार आप अपनी रैंक चेक करता था, क्योंकि वो ऊपर नीचे होती थी, और पॉइंट का भी डिफरेंस, पॉइंट के मतलब एक ही मार्क के ऊपर हम 2 या 3 लोग हुआ करते थे, मतलब इतना वो स्ट्रगल स्ट्रगल बोलूंगा मैं इसको, तो था उस समय। बट जैसे जैसे मतलब मैं अपने एफर्ट्स डालने लगा, मॉक इंटरव्यूज देने लगा, कि उस समय मैंने 6-7 महीने में करीब 70 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। That is the amount of effort you put in. 70 mock 70 interviews is mock. a huge thing. So to For get that me kind of also now, salary. मैं जब अभी सोचता हूँ कि मैंने रियली 70 दिए थे, या फिर लोग विश्वास भी करेंगे कि यार इसने 70 इंटरव्यू दिए हैं, तो कोई इतने कम समय में इतने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं हर रोज़ इंटरव्यू देता था, मॉक इंटरव्यू। तो वो जब मैं रियल इंटरव्यू देने लगा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब मॉक, जैसे कि मॉक ही अनदर मॉक, इट्स लाइक अनदर मॉक, तो इतना वो मैं कैजुअली लेता था फिर रियल इंटरव्यूज में। So what I can gain from or get or understand from what you guys are saying is, you continued and you continued. So you felt like giving up, but you guys continued. I think one of the biggest thing that I'm getting out of this is, आप लोगों ने जर्नी नहीं छोड़ी, आप लोगों ने माइंड में बोला होगा कि मैं क्विट करना चाहता हूँ या क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन आपने क्विट नहीं किया, यू कैरीड ऑन, and then you started putting more effort and those extra practices, and all of that effort eventually, helped you guys get where you're at today, right? So online is not taken as seriously, right? Classes जा रहे हैं तो physical जा रहे हैं, school physical classes attend किए हैं, college में physical classes attend किए हैं. How was it, when you joined the online course? Was that also a hurdle when you told your parents कि मैं online join कर रहा हूँ? हाँ, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव इट्स ओन एडवांटेजेस, लाइक कि हमें कम्यूट में उतना समय नहीं लगता, या फिर कम्यूट का समय हम बचा सकते हैं कि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लग रहा है, और आप फिर एफर्ट्स आपके मतलब वो 2 घंटे के रिड्यूस हो रहे हैं, और ऊपर से आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, वो एक अलग बात। फिर दूसरा ये है कि आप मतलब रिसोर्सेज जो भी आपको लगते हैं, जैसे कि आप सज धज के जाना है, या फिर जो भी कपड़े पहन के जाने हैं, जो भी मतलब वो उसमें पैसा खर्च अलग अलग हो रहा है, आपका टाइम, एफर्ट, पैसा, सब कुछ, राइट? हाँ, तो वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट बात लगती है ऑनलाइन एडवांटेज जो लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, वो ये है कि हम अगर कुछ समझ में नहीं आया हमारे क्लास में, तो हम रिपीट देख सकते हैं, राइट? उसको, उस चीज को, वो फिजिकल में कभी नहीं आएगा। तो हम एक्चुअली नहीं समझ में आया, कुछ नोट्स निकालने हैं खुद के, तो मैं क्या करता था, उसको ठीक है पॉज करके देख लो और नोट्स निकालो, और फिर से रिज्यूम कर दो उस सेशन को। राइट. व्हाट अबाउट यू? Was there some difficulty in choosing an online course? Was there some confusion in your mind, or when you were telling your parents about it? I had no choice actually. I was already working while I had to go for this course. So after my 9 to 5 job, I couldn't travel anywhere. I only had option of taking something online. Okay. So I took this out of no choice, and it worked for me. It was not that difficult to adapt. I used to feel little sleepy क्योंकि कोई person नहीं है ना सामने. It's just we people online. Yeah. So you're with yourself when you're online. Yeah. So it's our own motivation which is going to drive us. Right. So yeah, but AlmaBetter में I realized कि ये physical से भी ज़्यादा push करते हैं online. Is it? Yes. How do you say, like, are there any examples of online में how is it more helpful, or how did they push you more? In the night 8 to 10 we used to take our live classes. We were prompt questions
just after our session. And if we fail to answer, it's obvious that we were not attentive. So it shows up in the scoreboard that very day. So automatically we have to be attentive. Right. No option of not being attentive. Within 12 hours, after that, we had to submit our assignments. Again, we had no option. Right. If we do not submit, it shows up in the scoreboard. Right. So yeah, that was the push we had, even in an online class. So I can sense some rigor in the course. जो मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए टफ है, कैसे करूँगी मैं खुद ही, you know, that's how I am thinking. So you imagine how others would think. What does it take to go through that rigor? You know, what mental preparation? Was there some flexibility? In the very beginning of this course, I personally was feeling stressed, and that's why actually, as I said earlier, that I was in that group, and we always talk about leaving the course because of the course is very rigorous and we can't able to do or handle that much pressure. But एक महीने के बाद ऐसा हुआ कि अरे मतलब मैं तो ये जर्नी एंजॉय करने लगा। फिर ये लोग मतलब हंटर लेके बैठे हैं और हमें बोल रहे हैं कि ये करो, नहीं तो फिर आपका नहीं होगा, या फिर आपको सैलरी हाइक या फिर जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो सक्सेस पाना चाहते हो, नहीं पा सकते आप। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि एमपीएससी या यूपीएससी जो भी सिविल सर्विसेज है, वो लोग एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं कि एग्ज़ाम एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं हम कि लोगों को फिल्टर करने के लिए, मतलब लोगों को लेना नहीं है, एग्ज़ाम ले लो उसके लिए। क्यों लेना है? तो लोगों को नहीं लेने के लिए लेना है, लेने के लिए नहीं लेना है। तो मैं वो राइट तो मुझे वो लगता था हर वक्त कि अरे यार मतलब एक बहुत मुश्किल है 1400 क्रेडिट्स लेना इस हर एक मॉड्यूल में, और विदाउट इट वी कांट मूव और वी कांट पास एंड अटेम्प्ट सेकंड मॉड्यूल। बट वो धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस करने लगा या फिर जब मैं मेंटर्स की हेल्प लेने लगा, पर्सनली आई यूज्ड टू कनेक्ट विथ शिवम एंड विकास मोर, दे वेर हेल्पिंग इन माई प्रिपरेशन। अगर यही दो लोग मे बी यूपीएससी पढ़ाते उस समय, तो मैं आज एज अ IAS यहाँ पे बैठा होता। इतना वो पुश करके उन्होंने पढ़ाया। और मैं कभी कभी घर वालों को भी बोलता था कि had I put these much efforts in doing UPSC preparation, I would have been IAS until now. So it was not just your efforts, it was the Equal effort of the efforts. mentor, Yes. you, a lot of these things that came together for you to get where you're at, and that's the amount of effort and sacrifice of people. That's amazing. Do you feel so? I do feel that because our mentors were already in that field. They used to tell us कि ये जो pressure है ना, ये सिर्फ यहाँ नहीं है. Once you start working, it will be even more. We are just preparing you for that pressure. So आप लोगों ने अपने challenges की सारी बात की, इतना सब बताया. If you were to give one advice to all the people watching, which has good number of students of AlmaBetter, people who are wanting to take up data science and courses, you know, some advice from your challenge, what would you like to tell them? I would like to suggest them that do more practice. Practice is the only key to success actually, because apart from that, you need to keep yourself motivated throughout this journey, and maybe you need to sacrifice some of the things in your life and prepare yourself for your next life 2.0 maybe you can say. Right. So मैं जब कॉलेज में थी, मुझे ये बोला जाता था कि लाइफ में 3 चीज़ों में से, सब चीज़ों में से 2 ही चूज़ कर सकते हो, नींद और पढ़ाई, पार्टी और नींद, पार्टी और पढ़ाई. सो यू चूज़ एनी 2 थिंग्स एंड यू विल गेट टू अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस आपके रिजल्ट्स होंगे, बट यू कैन चूज़ एनी 2 ऑफ द थिंग्स. सो सिमिलर टू दैट, आपको अगर 2.0 पे जाना है, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा. That's lovely. Anything else that you'd like to share on that? Yeah, maybe you need some push, whether from your family or maybe from your wife or girlfriend. That I got support from her also in throughout this journey. So वो पुश करती रही कि नहीं आपको छोड़ना नहीं है. वो उस समय तो गर्लफ्रेंड थी, अभी तो वाइफ बन गई है वो, बट उसने काफ़ी पुश किया मुझे कि नहीं, वो भी मेरी मॉक लेती थी, मतलब हर वक्त
मैं नींद से उठा हूँ और बोलने लगी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर रिसेंट प्रोजेक्ट। और तो हर वक्त मैं मुझे प्रिपेयर रखता था उस चीज़ों के लिए। Even I think consistency is very important. Be it anything you do, like this is just a course, but maybe even if you relate it to our bodies or health, if we stop exercising for a week, then you will have to again start afresh. So be consistent with whatever you do. Choose a right mentor. That is also very important. And you will have to give up on social life for some time. It's just a phase. You can resume. And whenever you feel like giving up, just think about the bigger goal you have in your mind for what you have started. If you were to give me 3 things, guys, you know, 3 ऐसी चीज़ें अगर वो की नहीं होती या आपकी लाइफ में नहीं होती, आप ये चैलेंज ओवरकम नहीं कर पाते या आप जहाँ हो उस पड़ाव पे पहुँच नहीं पाते। एक तो अगर मैंने AI में नहीं होता तो मैं उसी लो सैलरी पे अभी तक काम करता रहता, अभी आपके सामने भी नहीं बोल पाता कुछ जो मैंने मतलब थोड़ी सी भी प्रोग्रेस की है या फिर अचीव जो भी कर पाया हूँ, वो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और जो मेंटरशिप मिली है मुझे AlmaBetter में, वो सब के कारण ही कर पाया हूँ। मे भी दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी जो फैमिली है वो अभी उनके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हाँ, जैसे वो बोलते थे कि हमारा भैया अब अच्छा कमाने लगा है या फिर सपोर्ट करने लगा है और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है अब सोसाइटी में, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी वो पॉसिबल होता कि उनको भी प्राउड फील करवाना या फिर उनके लिए कुछ करना, तो वो एक मानता हूँ मैं वो पॉसिबल नहीं होता। तीसरी बात ये है कि विदाउट दिस कोर्स आई थिंक आई वुड नॉट हैव बीन लीडिंग द ग्लोबल डेटा साइंस टीम here at in my current organization. So I thought this data science journey was impacted my entire professional life in a very positive way. So first of all, we need to be around brutally honest people during our struggle time, because they are the ones who will be telling you how much have you done. I don't want any fake motivation, अरे तुमसे तो हो ही जाएगा. No, I want somebody honest to keep telling me my flaws, where am I lacking. Second one is we need to have good mentors. That is one thing very important. And the third thing, the ability to keep reminding yourself the desire and the motivation which led me to start this journey. Right. Wow, I think it's going to be very, very helpful for the learners. Okay, so with that, let's move on to the next and fun segment. इस सेगमेंट का नाम है एक कहानी एलम की जुबानी। ठीक है, तो यू गाइस आर एलम्स, आपके पास मल्टीपल हजारों कहानियां होंगी, कई हंसी की, कई रोने की, किसी दोस्त की, किसी मेंटर की। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। कोई कहानी? बिल्कुल, ऐसी तो कई कहानियां हैं, बट आज राजेश के साथ है तो राजेश के साथ की एक कहानी बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा एक स्कोर बोर्ड होता है। हाँ। तो हमें असाइनमेंट्स के लिए एक दूसरे से कॉपी करने पे काफ़ी हैवी पनिशमेंट थी। स्कोर बोर्ड पे ऑलमोस्ट 200 to 500 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे, बट देन वी वर अलाउड टू टेक सम ऑनलाइन रेफरेंसेस। सो फॉर अ पर्टिकुलर असाइनमेंट मैं और राजेश हम दोनों स्कोर बोर्ड पे बॉटम पे थे एक बार। द रीज़न बीइंग बताया गया था कि हम दोनों ने एक दूसरे से कॉपी किया है, बट देन उस दिन के पहले वी हैड नेवर हैड एनी इंटरेक्शन विद ईच अदर। आप दोनों का ऐसे आया कि कॉपी किया है, हाँ, बट आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे? नहीं, और मिले नहीं थे? नहीं, और बात नहीं की थी? कभी नहीं। तो ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली हमने जो असाइनमेंट किया था वो किसी कैगल की कंपटीशन की नोटबुक जो होती है उसको रेफ़र, हमने दोनों ने उसको रेफ़र किया था और वो मेंशन मतलब उससे सॉल्व किया था, और उस वजह से हमारे 200 या 300 क्रेडिट्स कुछ लेस हो गए थे उस समय और हम चले गए थे बॉटम में। और फिर मुझे मतलब कन्विंस करना पड़ा कि हम दोनों ने जो है मिलके चीट नहीं किया है, कॉपी नहीं की है,
हमने एक ही सोर्स से वो reference रेफर किया किया। हाँ, मतलब उतनी हेवी पेनल्टीज भी रहती थी उस समय, हाँ। तो प्लेगरिज्म का नो चांस, कॉपी चीटिंग नो चांस वाज देयर। So then how did you guys convince them? माने वो नहीं माने? We हाँ, had to मतलब justify ourselves. राइट We both had sent the links from where did we take the reference. It took quite some time to convince them. Did you feel Then- like beating him up and did you feel like beating her up कि ये कौन है यार ये लड़की क्या we क्या कर both दिया were है? we both were shocked. How did this happen? Did we Even ever we don't talk? know each other at the time. It was very initial days. हाँ तो हमारी तो जान पहचान नहीं थी, तो मैंने भी सोच मतलब ये कैसे हो सकता है, या फिर ये गलती से हुआ होगा या फिर जो भी है। बट बाद में पता चला कि नहीं, इन्होंने भी सेम असाइनमेंट जो मतलब प्रोजेक्ट था उसको रेफ़र करके असाइनमेंट सॉल्व की, तो मैंने भी वही किया था, तो उस वजह से हमारा दोनों का सेम आया था। तो वी सेंड दैट लिंक टू द मेंटर्स एंड सेड दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वी टुक अ रेफरेंस फ्रॉम द सेम Kaggle assignment competition. And that's how we became friends. So that incident led us to become friends. nice तो दोस्ती ऐसे हुई फिर। हाँ। हाँ, तो ऑनलाइन के उसमें बता ही रहे हो मेमोरीज, तो दोस्त के बारे में कुछ बता दो, कोई दोस्त की कोई स्टोरी की are there, how did you make friends? Was it easy to make friends? Was it easy to do your group projects together? कोई दोस्त हैं जिनके साथ आज भी टच में हो? हाँ, काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारी मतलब जान पहचान हो गई ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स एंड ड्यूरिंग असाइनमेंट्स। तो ऐसा था कि जैसे देवाशीष से मैं काफ़ी बार ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करके उसके साथ मैं हेल्प लेता था। जैसे कि मुझे एक कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो उसकी हेल्प ले ली, 1-to-1 अरेंज किया हमने और वो उसने समझा। मुझे आज भी पता है कि about variables he told me that okay, imagine that there is a box and that box is nothing but variable, and in that box you are putting some different things over there in that box, and those things are nothing but the values assigned to the variables. So अभी तक मुझे वो याद है कि उसने वैसे समझाया था मुझे, तो काफ़ी सारी हेल्प हुई। आप बताओ आपकी कौन सी कहानी है? देखा जाए तो काफ़ी सारी मेरे पास मतलब कहानियाँ हैं, एक कहानी नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा एक ग्रुप था, हम लोवेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स का, वो जो मतलब बोलते थे कि नहीं मुझे अब कोर्स छोड़ के जाना है, उनका एक अलग था। फिर भी कुछ समय तक एक 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक मैं फिर से लोवेस्ट परफॉर्मिंग में मतलब ग्रुप में चला गया था, और उसके लिए मेंटर्स ने हमारा एक और ग्रुप तैयार किया था। तो उस ग्रुप का नाम था हेल्प मी निग्गा। तो अभी तक मुझे पता नहीं है उसका मीनिंग, हेल्प मी निग्गा। तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। मैं तो बोल गया कि वो वाला ग्रुप अभी तक चल रहा है। तो तो वहाँ पे ऐसा था कि एक मेंटर असाइन करके दिया था और उससे हम क्वेश्चंस पूछ ले या फिर और हमारी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, उस वजह से उन्होंने एक ग्रुप किया था हमारा। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर्स चलते थे, हम काफ़ी मतलब मैं अभी देखता हूँ उस ग्रुप को, अरे यार ऐसे सिली क्वेश्चन में पूछता था उस समय। तो मतलब हम सारे ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस जो भी हमारे मन में आए पढ़ाई के बारे में या फिर इन जनरल डेटा साइंस करियर के बारे में, वो वहाँ पे हम पूछ लेते थे उनसे। वो सभी आज कौन सी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। It's time to spice it up a bit, guys. We are moving to our rapid fire round. So let me explain this round to you guys. You guys have buzzers. There are phones next to you which have buzzers. There are going to be like 5 to 7 questions. I'm going to ask. Whoever knows the answer presses the buzzer. I'm going to state who pressed the buzzer first. The person who answers it correctly gets a point. The one who gets the maximum points gets a hamper. We have a hamper right there. That's the hamper, right? So it has some fun items in it, very nicely curated for you guys, but only one person gets to win it, right? Are you guys excited and ready? Maybe she will win, but you'll take the gifts. I will take the gift. ठीक है. We'll share. Okay, so here we go. Are you guys ready? Yes. Yep. On 3, 2, 1. So name a friend you made at AlmaBetter. Okay, you go. Devashish. Okay, great.
What was the name of AlmaBetter's first 3 cohorts? Arav- You go. Aravali was the first cohort. I forget We about go the to two names. Soumya. Himalaya. Yeah, right. Then Aravali, Himalaya, and which was the third mountain in Jaskar. Wrong. Okay, you want to Oh. try all 3? It's Aravali, Himalaya, and even. Okay, I'm I'll give you confused. guys the answer. Nilgiri was the third Oh, one. Nobody Nilgiri. gets the point. Who are the 5 founders of AlmaBetter? You go, you tried it first. Shivam, Vikas, Alok, Arshan, and Vivek maybe. Wrong. You want to go? Okay. Yeah. Shivam, Vikas, Alok, Arshan, and the fifth one, fifth one was from Yes. Ravi. Right Ravi. answer. So Ravi. you get it. You get it. Uh-oh. Soumya gets all the points. 3 words that come to your mind when I say data science. You go first. Artificial intelligence, machine learning, and Python. Okay. Who's your favorite teacher from AlmaBetter days? You go. Vikas. Nice. Which subject was was difficult. something you found the toughest? You go. Python. Okay. Which was your favorite subject? You go. Statistics. It was still me. It was still me. Her voice, the thing she pressed it came later. उसका late आ रहा है. मैंने देखा press किया. But it should be all about sound, right? It should not be like उसने press अभी किया और ठीक है, last वाला बिजली question पहले को चमक repeat गई और करती फिर हूँ. बाद में Okay, आवाज last आ वाला गई. question. I would change the last question for you guys. If you could name one person that was instrumental in changing your life, that one. Shivam. We end our rapid fire round with that. Let's announce the winners. So do you guys know who was the winner? Yeah. Yay! And the winner is Rajesh More. Yay! Let's get you the hamper. Congratulations, Thank Rajesh. you. Thank you very much for this wonderful gift. Okay, guys, thank you so much for taking out time coming down here. It was amazing understanding your journeys and getting to know you guys so closely. How did you guys feel about the whole show? It was amazing. Thanks for having us here. इतना इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया ये पॉडकास्ट होगा. मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया है पॉडकास्ट को. It really matters to us. I think your journeys have been phenomenal. If there was one thing you wanted to, end the show with or give that as an advice to the viewers, is there something that you want to say? I won't say as advice, but I have a lot of gratitude for whatever I've achieved till here. And a big part of thank goes to AlmaBetter and to the mentors. Yeah, I would also suggest the newcomers or whoever wants to learn data science, have faith in system, practice as much as you can. These are the factors which will help you to sail through this journey. With that, we come to the end of our episode, guys. Thank you so much for taking out your time and for coming here. It was amazing for me. I never thought like it would have been so like it would have been so much fun on this episode. मैं ऐसा सोचता था कि यहाँ एक एजुकेशनल पॉडकास्ट होगा और जस्ट अबाउट सक्सेस और वो सब डिस्कस होगा यहाँ पे, बट it was more than that. It was like there were many funny moments, especially I liked the last round, rapid fire round. मेरा भी favorite था. आपका? How do you feel about it? It was amazing. Rapid fire नहीं बोलूँगी, I didn't win it. So just take the hamper. Then you can say anything. yes. The entire podcast was amazing. I wish to be here again and again. But really, guys, I think your journeys were so inspiring for me to hear. I'm sure they were very, very inspiring for the viewers as well. So thank you so much for sharing that much with us. I think it must have taken something for you guys to come here and to share that part of your life with us.
It means a lot. So this was our first episode, and we have many more episodes coming for you. If you have any questions for our alumni sitting here, please put up your questions in the comments below. And stay tuned for the next episode. I'll see you next time.